Good evening, students. Can you hear me? Am I audible and visible? Give me the clearance, please. Am I audible and visible? Tushar, Asif, Prashant, all clear, all good, very good. चलिए start करें आज का session. Okay, चलिए. Let's begin the session today. Again, a important session, simple topic from operating system perspective. Yes, very good evening, all clear. Very good, thank you so much. So, welcome again to PW platform from my side. Mohammad Asif. Okay, I will try to give a review if time permits. मेरा ऑब्जेक्टिव ये है एंड ऑफ द सेशन पे आपके साथ कुछ डिस्कस करूं विथ रिगार्ड टू प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एट दिस मोमेंट, क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है, एंड ऑल्सो अबाउट टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा, हाउ टू अटेम्प्ट द टेस्ट सीरीज, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, वो मेरा ऑब्जेक्टिव है डिस्कस करने का, ठीक है. लेट अस सी, या फिर कभी कुछ चांस मिला मुझे कोई यूट्यूब सेशन करने के लिए, तो देन डेफिनेटली आई विल टेक अप सम टॉपिक्स ऑफ योर इंटरेस्ट लाइक वर्किंग सेट मॉडल और अदर टॉपिक्स. ओके, या तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है. ये एक स्मॉल टॉपिक है, डिसशेड्यूलिंग हम कवर कर लेंगे जल्दी. फिर उसके बाद एक रिमेनिंग टाइम में मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रैटेजी के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे प्रिपेयर करें इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स परहैप्स, ठीक है, और क्या करना चाहिए, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं बेसिकली, विच विल बी यूजफुल फॉर यू. ऑल राइट, ठीक है. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. The objective is to first start our discussion by way of talking about what is the need for disk scheduling, okay? And then we will also discuss disk scheduling techniques or disk scheduling algorithms. चलिए start करते हैं directly. First, what is the need for disk scheduling? हम in particular बोलेंगे disk, in general बोलेंगे device. Why do we need this? That we need to understand first. And before that, I would like to emphasize that this topic is again a 90% topic. मेरा मतलब यह है कि 90% of the students will work out problems, or GATE students, GATE aspirants will work out problems correctly based on this topic. तो इसीलिए आपको चाहिए कि ये टॉपिक आप थरो हों. जैसे CPU scheduling is also a 90% topic. Disk scheduling is also a 90% topic. Predominantly, more often, most often, 90% of the GATE aspirants will work out problems correctly. So at any cost, आप कोई किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते on this topic. Absolutely, अच्छे तरीके से problem solving कर लीजिए based on disk scheduling. And many questions were asked. Some good questions, very good questions were also asked in earlier papers from this domain of disk scheduling. चलिए, need for disk scheduling. Let's for example first let us take like sorry, color selection. Let's say this is a CPU and here we have some ready queue, for example, or I will slightly shift this. Or first we will take ready queue itself. This is a ready queue, and then here I have CPU, and let us say some device queue as such here. एक डिवाइस क्यू ले लेंगे और एक यहाँ पर डिवाइस है. चलिए स्टार्ट करेंगे अब with respect to this diagram to understand what is a need for disk scheduling. This is CPU, this is ready queue, this is the disk queue. मान लीजिए disk queue, device queue हम general बोलेंगे, disk queue in particular. This is your disk. ठीक है. Yeah, good evening again to those who came late or joined just now. Just see on board. Imagine some process PR is running on CPU.
कोई प्रोसेस रन कर रहा है मान लीजिए यहाँ पर, और देर आर सम प्रोसेसेस ऑलरेडी देयर इन द रेडी क्यू, PA, PB, PC, PD, like this. And let us also assume some process PK is performing its IO operation on this, or the device is busy performing the IO operation of this process PK, and there are some processes, say for example PX, PY, PZ, waiting their chance to get themselves serviced onto this disk. ये सिनारियो है. ये सिनारियो से हम आप दो चीजें समझ सकते हो, नीड फॉर CPU शेड्यूलिंग एंड नीड फॉर डिस्क शेड्यूलिंग. जिस तरह प्रोसेसर कैन वर्क आउट, कैन एग्जीक्यूट ए सिंगल प्रोसेस, वन CPU कैन एग्जीक्यूट वन प्रोसेस, इसी तरह ए डिस्क कैन सर्विस द रिक्वेस्ट ऑफ ओनली वन प्रोसेस एट ए टाइम. ए डिस्क कैन सर्विस द रिक्वेस्ट ऑफ ओनली वन प्रोसेस एट ए टाइम. क्योंकि दिस इज अ मल्टी प्रोग्राम्ड एनवायरनमेंट. मल्टी प्रोग्रामिंग यही नहीं है कि इट इज ओनली फॉर रेडी क्यू. आई कैन हैव मल्टीपल प्रोग्राम्स प्रेजेंट इन द डिवाइस क्यू. हमने वो पहले ही देखा रेडी, जब हम प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कि हमने देखा कि आई कैन हैव मेनी रेडी प्रोसेसेस, आई कैन हैव मेनी ब्लॉक प्रोसेसेस. तो क्या होगा देखिए आप, व्हेनेवर दिस रनिंग, फर्स्ट आई एम टेलिंग यू द नीड फॉर CPU शेड्यूलिंग. व्हेनेवर दिस रनिंग प्रोसेस कंप्लीट और नीड्स टू परफॉर्म IO ऑपरेशन, or if it get preempted, if this process PR, if it get preempted, or if it needs to go for IO operation, तो क्या होगा, मान लीजिए it needs to go for IO operation, then we will add PR to this queue. And then what happens, CPU become idle. So here we will have short-term scheduler. This short-term scheduler would use its criteria of scheduling to decide which ready process should run next onto CPU. That is called as CPU scheduling. ठीक है, using its criteria, arrival time, burst time, priority, time quantum, या जो भी हो जो हमने पढ़ा CPU scheduling में. So using its criteria, it is going to decide which ready process should run next onto CPU. That is CPU scheduling, nothing but the design of short-term scheduler. उसी तरह जब भी ये process PK is going to finish its IO operation, यहाँ पर IO perform कर रहे हैं हम, whenever this is going to finish its IO operation, so what happens, the process PK completing its IO operation will come out from here and it will join the ready queue. PK will join the ready queue, making the device idle, making the disk idle. जब disk idle होगी, right, we have to decide, the operating system will have to decide which of these block processes should get service next. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर assume कर रहे हैं inherently, realistically, कि disk has the capability to serve only one process request at a time. तो हमें ये decide करनी होगी कि कौन सा block process की request हम satisfy करेंगे disk पर, right? So for that there should be some policy manager. जैसा हमारे पास short term scheduler है, disk scheduler, CPU scheduler है, उसी तरह यहां पर एक कंपोनेंट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, हम उसे बोलेंगे डिस्क शेड्यूलर और डिवाइस शेड्यूलर. ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू डिसाइड यूजिंग इट्स क्राइटेरिया, इट इज गोइंग टू डिसाइड विच अमंग दीज ब्लॉक प्रोसेस शुड बी सर्व नेक्स्ट. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न हियर. दैट इज व्हाट इज द नेसेसिटी फॉर डिवाइस शेड्यूलिंग, दैट इज अ नीड फॉर डिवाइस शेड्यूलिंग. क्यों? क्योंकि वी कैन हैव, हाँ, अगर मान लीजिए सिर्फ एक ही प्रोसेस होता डिवाइस क्यू में तो कोई जरूरत नहीं थी डिवाइस शेड्यूलिंग की, क्योंकि वी हैव मल्टीपल प्रोसेसेस प्रेजेंट इन द डिवाइस क्यू, राइट? सो देयरफॉर देयर इज अ नीड टू डिसाइड which process request should be served next onto the device, because the processes will come onto the device queue, join the device queue with some request. Sir, I want to read so and so track, I want to read from so and so cylinder. That request will come, as we are going to see. Yeah, very good evening again, Mohit and Bhagwadari and Ayush, everybody. So those who joined late, welcome again. So we are continuing with this scheduling. Kindly be joined and try to understand. ठीक है, so this is the necessity for this scheduling. जिस तरह यहाँ पर हमारे पास कई क्राइटेरियाज थे, उसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास कई क्राइटेरियाज होंगे. लेकिन वो क्राइटेरिया डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर एक बात आपको बता देना चाह रहा हूँ. बेस्ड ऑन द डिस्क ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, एज पार्ट ऑफ दिस ओवरलैपिंग टॉपिक, ठीक है, यू विल स्टडी अबाउट इन डिटेल अबाउट दिस इन द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. तो डिस्क ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा जब आप पढ़ेंगे, तो फर्स्ट, डिस्क इज अ कलेक्शन ऑफ प्लैटर्स. Each platter is divided into surfaces, two surfaces. Each platter has two surfaces. Each surface is divided into tracks. Track is divided into sectors.
सेक्टर इज द यूनिट ऑफ ट्रांसफर, जो ट्रांसफर होगा ना डिस्क और मेमोरी के बीच में, दिस इज यूनिट ऑफ ट्रांसफर, यूनिट ऑफ ट्रांसफर सेक्टर. वी रीड एंड राइट इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स. So the process will put a request in the device queue with regard to sectors or with respect to track, or if not, there is a third unit with which it will put the request. It will be like cylinder. तो आपको जो एग्जाम में दिया जाएगा क्वेश्चन, इट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू दीज पैरामीटर्स. या तो आपको ट्रैक नंबर दिया जाएगा सेइंग दैट प्रोसेस वांट टू रीड सम डेटा फ्रॉम सो एंड सो ट्रैक, या फिर आई वांट टू रीड सो एंड सो सेक्टर, और फिर ये दिया जाएगा सिलेंडर. अब मैं ये पूरे डिटेल्स में नहीं जा सकता हूं बिकॉज दैट इटसेल्फ विल टेक a complete session on disk organization. So I am safely assuming that you know about all this organization: platters, surface, tracks, sectors, and cylinder concept. Okay? So the problem would come either in the form of reading from tracks. Most often जो gate में मैंने देखा है, they have given the question either in terms of track numbers or in terms of cylinder numbers. Very rarely they have given for sector number, but most often for these two. Track and cylinder are synonyms. I mean, as far as problem solving is concerned, because number of cylinders equal to number of tracks on the surface. That you would study, as I said, in the subject of CO. Number of tracks जो होंगे, number of cylinders जो होंगे, number of tracks के equivalent रहेंगे. ठीक है? So that is the point paradigm. So based on this, let us now straight away jump into understanding various criteria. हर criteria के basis पर एक शेड्यूलिंग टेक्निक होगी, एक शेड्यूलिंग टेक्निक, राइट. नेचुरल क्राइटेरिया विल बी व्हाट. आप सीपीयू शेड्यूलिंग ले लीजिए या डिस्क शेड्यूलिंग ले लीजिए. नेचुरल क्राइटेरिया क्या होगा, जल्दी लिख के मुझे बताइए. व्हाट विल बी द नेचुरल क्राइटेरिया, वेदर इट इज सीपीयू शेड्यूलिंग और डिस्क शेड्यूलिंग? व्हाट विल बी द नेचुरल क्राइटेरिया फॉर शेड्यूलिंग द प्रोसेसेस? कम ऑन, नेचुरल एल्गोरिथम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. वेरी करेक्ट. FCFS. जो भी प्रोसेस की रिक्वेस्ट पहले आएगी वो पहले हम सर्व करेंगे, दैट इज FCFS. तो जैसा सीपीयू शेड्यूलिंग में हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाज द डिफॉल्ट, आई मीन द नेचुरल एल्गोरिथम, सो हियर आल्सो वी विल हैव नेचुरल एल्गोरिथम. चलिए मैं एक डेटा सेट लूंगा, वो डेटा सेट के बेसिस पर ही हम पूरे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स लर्न करेंगे. ठीक है? और फिर उसके बाद उसके परफॉर्मेंस देखेंगे, और फिर हम कुछ प्रीवियस गेट क्वेश्चन जो टिपिकल गेट क्वेश्चन है वो भी हम लेंगे. चलिए मेरे फोन में कुछ डेटा सेट है, मैं वो ले लूंगा. I am taking it from Galvin. So let us see. Consider the following process requests. And let's imagine that this is in FIFO order. These are the track numbers: 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67. These are the process requests. So what are these numbers representing? Dear student, these are representing track numbers. Let us say track. इसका मतलब ये है, the process want to read, process P1 want to read some part, maybe some sector, maybe some page, maybe some unit from track number 98. Process P2 want to read some sector from track number 183, track number 37 and so on. ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फीफो ऑर्डर में ये प्रोसेस रिक्वेस्ट है. तो हमें किस ऑर्डर में ये प्रोसेसेस को सर्व करनी है ये हमें देखना है. जैसा मैंने कहा कि द नेचुरल अप्रोच ऑफ शेड्यूलिंग इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट अदर डेटा शुड ऑल्सो बी गिवन टू अस, राइट. व्हाट अदर डेटा शुड ऑल्सो बी गिवन टू अस in order to apply or in order to solve this problem. So first of all, we should be given something called number of tracks. Number of tracks, total number of tracks. So let's say our disk has a total of 200 tracks. This will be given to us 0 to 199 sequentially numbered. मतलब एक सरफेस पर, डिस्क के एक सरफेस पर, राइट, डिस्क के एक सरफेस पर 200 ट्रैक्स है. डिस्क हैज प्लैटर्स, हर प्लैटर के दो सरफेसेस है,
हर सरफेस पे नंबर ऑफ ट्रैक्स कितने हैं, 200 ट्रैक्स। इसके अलावा अदर देन दिस यू विल ऑल्सो बी गिवन समथिंग कॉल्ड द हेड पोजिशन, रीड राइट हेड। हर डिस्क में एक रीड राइट हेड होता है। दिस इज द यूनिट विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द रीड एंड राइट ऑपरेशन। तो रीड राइट हेड की अपनी एक पार्किंग पोजीशन होती है, PARKING, पार्किंग पोजीशन। वो कहां पर फिल वक्त ठहरा हुआ है, पार्किंग किया हुआ है, पार्किंग पोजीशन। तो चलिए वी विल अज्यूम समथिंग लाइक दैट्स। लेट्स से दिस इज द हाफ वे मार्क, दिस इज सॉरी 200 है ना, तो ये 100 ले लेंगे। लेट अस टेक दिस इज 100, लेट्स से द हाफ ऑफ इट 50, दिस इज हाफ ऑफ इट 150। Initially imagine, for example, the read write head is positioned at some track number 53, यहां पर है। The dot indicate the position of read write head. So we assume that the read write head is at track number 53. तो हमें यह देखना है कि in what order can we satisfy this request? That is what. So as I said, first algorithm, right? First algorithm is FCFS. मतलब आप उसी ऑर्डर में सर्व करोगे जिस ऑर्डर में प्रोसेस रिक्वेस्ट ऐड हुए हैं। तो चलिए सेटिस्फाई करेंगे। तो फर्स्ट रिक्वेस्ट सेटिस्फाई जो होगी ट्रैक नंबर 98 की होगी, मतलब हम 53 से ट्रैक नंबर 98 पे जाएंगे। मेकिंग हाउ मेनी सीक्स, कितने सीक्स बनाए हम, 98 माइनस 53, 98 माइनस 53, दोज मेनी सीक्स, कितने हो गए वो, 45। तो वी हैव मेड 45 सीक्स। अगर हमें टाइम ऑफ 1 सीक दिया गया तो हम वो बेसिस पर सीक टाइम फाइंड आउट कर सकेंगे। 45 नंबर ऑफ सीक्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ 1 सीक, उस बेसिस पर हमें सीक टाइम पता चलेगा वो प्रोसेस रिक्वेस्ट का। चलिए आफ्टर 99 कहां जाएंगे हम, 183। मान लीजिए 183 इज हियर, so we'll go to 183, this is 183। फिर उसके बाद क्या होगा, 37 पे आएंगे, perhaps 37 you can say something here। तो आप यहां से बिल्कुल 37 पर आएंगे ऐसे, ठीक है। फिर 122, दिस 125, सो 122 इज हियर लेट अस से। तो आप 37 से 122 पर आएंगे। फिर 120 से 14 पे जाएंगे, 14 लेट अस इमेजिन इज हियर, ठीक है। 14 के बाद 124, लेट अस कंसीडर 124 इज हियर, फिर 124 के बाद 65 पे जाएंगे, मे बी 65 वी कैन कंसीडर हियर, ठीक है, ठीक है। चलिए 65 के बाद 67, मे बी 67 इज हियर इटसेल्फ, स्मॉल मूवमेंट, 67। ये हो गया हमारा सर्विसिंग द रिक्वेस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, 2 पीपल हैव ऑलरेडी डन। तो यहां पर अब ये डायग्राम बनाने के बाद, ये हम जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर में हम कंप्लीट कर रहे हैं रिक्वेस्ट, वो बनवाने के बाद यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज कॉल्ड टोटल सीक्स फॉर दीज रिक्वेस्ट satisfying these requests using first come first serve। what is a total number of seeks, मतलब going from 53 to 183, 183 to 137, 122 plus 37, then 122 to 14, 14 to 124, and then this adding up the length of all the segments will give you total number of seeks। अगर आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे 2 लोगों ने ऑलरेडी किया है, राइट, 2 लोगों ने ऑलरेडी किया है, राइट, so that is nothing but 640 646 आर मेड। अगर हमें टाइम ऑफ 1 सीक दिया जाएगा तो हम टोटल सीक टाइम भी मालूम कर सकेंगे, 640 इंटू टाइम ऑफ 1 सीक। अगर टाइम ऑफ 1 सीक 1 मिली सेकेंड हो तो 640 इंटू 1 मिली सेकेंड, 640। उसके बाद एवरेज सीक टाइम भी मालूम कर सकते हैं आप, 640 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। कितने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 640 डिवाइडेड बाई 8 विल गिव यू एवरेज सीक टाइम। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। या तो आपको टोटल सीक्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा, जैसा 640 हमने किया, या फिर आपको एवरेज सीक टाइम फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा, गिवन ट्रैक टाइम और गिवन टाइम ऑफ 1 सीक। ट्रैक टाइम का मतलब रीड राइट हेड को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, हम उसे बोलते हैं ट्रैक टाइम, TTT। जनरली हम लिखते हैं TTT, ट्रैक टाइम। तो अगर इफ यू आर गिवन ट्रैक टाइम, देन आई कैन फाइंड डेफिनेटली टोटल सीक टाइम, या फिर we can also find
एवरेज नंबर ऑफ एवरेज सीक टाइम, हम वो डिटरमिन कर सकते हैं. सो चलिए, दिस इज द थिंग. चलिए उससे आगे बढ़ के हम एक बात यहाँ पर देखेंगे कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज सी ऑन बोर्ड. what do you think is the objective of disk scheduler? जैसे हमने CPU शेड्यूलर का ऑब्जेक्टिव देखा था. CPU शेड्यूलर का क्या है? CPU शेड्यूलर का ऑब्जेक्टिव, CPU शेड्यूलर का ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज CPU यूटिलाइजेशन, टू मिनिमाइज एवरेज टर्न अराउंड टाइम, टू मिनिमाइज एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम. ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव था. उसी तरह जब आप डिस्क शेड्यूलर डिजाइन करोगे तो उसका भी कुछ ऑब्जेक्टिव होगा. तो क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए यहां पर? वेरी करेक्ट, द ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस एवरेज सीक टाइम. आप ये एवरेज सीक टाइम तभी रिड्यूस कर पाओगे जब टोटल नंबर ऑफ सीक्स इज रिड्यूस्ड. मतलब इस ऑर्डर में आप सर्व करना चाहिए, उस ऑर्डर में आप सर्व करना चाहिए जिससे total number of seeks become minimum, is getting reduced. That is what is the objective. The objective is to reduce the total number of seeks. Thereby that will reduce the average seek time. Got it? So that is the paradigm of it. तो हमें किस ऑर्डर में सर्व करना चाहिए so that the number of seeks become minimum. That is our next scheduling technique. So what is that? Please tell me. What is that? What is that technique which results in reducing the total number of seeks? Come on. Yes. Spindle makes, yeah, Bhagwadari, you are right. Spindle makes read-write head. Yeah. The spindle rotates the platter and the read-write head has its own disk arm to rotate. That you would study in the CO organization, as I said. Yes, SSTF. What does SSTF stand for? SSTF stands for shortest seek time first. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ shortest seek time first, SSTF. ठीक है. It is also called nearest track next, or closest track next. Yes, nearest track next or closest track next. Shortest seek time first. मतलब जहां पे भी हमारा read write head हो, wherever we our read write head is, you should serve that request first, which is going to give you minimum number of seeks. From the current position, you should go to that track, that request which is nearest, closest track next. तभी आपका minimize होगा overall seek time और average seek time. मैं चाह रहा हूं यहाँ पे ये डेटा के लिए, यहीं पर आप लिख के बताइए, same data set, right? Assuming read write head is at track number 53, Can you work out on your own? Let me see. Can you work out on your own and tell me, using shortest seek time first, total number of seeks कितने आएंगे for these requests? Come on, work out and tell. I'll give you 2 minutes of time. 2 minutes of time दूंगा मैं. Please work out and tell. What is the total number of seeks made by read write head in serving the request using shortest seek time first? Come on, boys and girls, please work out. ये देखिए बहुत सिंपल टॉपिक है. आई अंडरस्टैंड यू मे बी नोइंग इट, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप प्लीज डू इट. मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, प्लीज डू इट, बिकॉज बाज वक्त बहुत सिंपल मिस्टेक करते हो आप लोग, तो वो मिस्टेक अवॉइड हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे. वेरी गुड चंचल. 236 ट्रैक, या फ्रॉम 53, या राइट नाउ एट 53, ट्रैक नंबर 53 से आप शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट अप्लाई कीजिए और डिटरमिन कीजिए इन व्हाट ऑर्डर दीज रिक्वेस्ट आर सेटिस्फाइड. What other? Yes, many people have done. Excellent. Very good. 236 is correct. Chaliye, those who have not done, please do it so that you can compare with my answer here. Generally, people make some silly mistakes in solving these questions and they repent a lot. That should not happen. That is what I am saying. That should not happen. ठीक है. चलिए start करेंगे. From 53, which is closest? Naturally, 65 is closest. So I go to 65. Right? I go to 65. 65 is here. From 65 naturally to 67. 67 के बाद कौन सा आएगा? देखिए अब दो है, 98 है और 37 है. 67 से 98 है 31 और 67 से 37 है only 30. तो यहां पर जनरली people are going to make mistake. तो हम आएंगे 37 पर.
ठीक है। 37 के बाद 14, ठीक है। 14 के बाद देयर इज नो ऑप्शन, यू हैव टू गो फॉर 122, 122 एंड 122 के बाद 140, 124, उसके बाद है 183 इस ऑर्डर में। So total number of seeks is nothing but the length of 3 segments, 183 minus 14 plus 67 minus 14 plus 67 minus 53, इस तरीके से होगा, इस तरीके से। I hope you got the point. ठीक है। So if you calculate the length of number of segments, this will very rightly, you said 236 number of seeks. So generally in most of the cases this is supposed to be the optimal algorithm. It is going to generate the least number of seeks. Of course there are some exceptions, that's why I don't want to. After 14, 98, 98 is also there, so it will come in the same segment, correct, you are right, you are right, yeah, correct. चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या करूंगा मैं, बिकॉज अगर मैं इसे रब कर दूंगा तो आपके लिए नोट्स के लिए परेशानी हो जाएगी। आई विल राइट ऑन नेक्स्ट पेज अनदर डेटा सेट, राइट, एंड वी विल study it, yeah, और एक डेटा सेट लेंगे हम, I mean same data set in the next page. I will write down the track numbers directly. Process requests are 98, 183, 37, 122, 14, 124, same data set I am repeating again for other algorithms, 65, 67. चलिए, these are requests of processes. So I'll take the same thing. I'm assuming that, okay, I'm assuming that this is again 0 to 199. This is halfway through. This is half of it, and this is half of it. Read write head as usual is at track number 53 initially. So same data set. Come on, let's work out. So what is the third algorithm? Other possibilities. Come on, write down. Let me know what are the other algorithm that you are familiar with. हमने अब तक देखा first come first serve और देखा shortest seek time first. उसके अलावा what are the other algorithms? Scan. Yes. Scan, also called elevator algorithm. Also called elevator. Elevator. Elevator का मतलब है lift. जैसे लिफ्ट यूज होगी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, गोइंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, राइट, एग्जैक्टली लाइक दैट द रीड राइट हेड scans through the request as it proceeds along. Scan, that is why it is called scan. It moves in the direction, one direction, maybe forward direction or backward direction, right, higher number track or lower number track, as and when it encounter the request it satisfy them. जैसे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लिफ्ट ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करेगी, satisfy the request of the customers at different floors, उसी तरह read write head will also be going from one end to the other end. तो ये स्कैन और दूसरे एल्गोरिथम्स यहाँ के अब जितने भी है, स्कैन है, लुक है, सर्कुलर स्कैन है, सर्कुलर लुक है, जितने भी एल्गोरिथम्स है उनको अप्लाई करने के लिए, राइट, अपार्ट फ्रॉम नोइंग द करंट पोजीशन ऑफ रीड राइट हेड, हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन से डायरेक्शन में रीड राइट हेड मूव हो रहा है। क्या हायर नंबर ट्रैक में मूव हो रहा है 53 से, या लोअर नंबर ट्रैक्स में मूव हो रहा है। जनरली वो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो यहां पर हम अज्यूम करेंगे कि वी आर मूविंग इन हायर नंबर ट्रैक्स, हायर नंबर ट्रैक्स, वी आर मूविंग इन हायर नंबर ट्रैक्स, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। तो किस ऑर्डर में हम सेटिस्फाई करेंगे देखेंगे। अब 53 से हम पहले कहां जाएंगे, 53 से अब विल मार्क द रिक्वेस्ट 98, 98 is here, then 183, maybe 183 is here, then 37, 37 let us say is here, ठीक है, then 122, 122 let us take it here, 14 let us take it here, then 124 is here, then 65 let us take it here something, और लास्ट में होगा 67। चलिए, तो किस ऑर्डर में जाएंगे रिक्वेस्ट देख लीजिए। यहां पर 53 to 65 होगा, 65 to 67 होगा, 67 to 98 होगा, 98 to 122, 124, फिर उसके बाद हम जाएंगे 183, फिर वो लास्ट ट्रैक जाएगा। ये एक प्रॉब्लम है, इट विल गो टू द लास्ट ट्रैक एंड फ्रॉम लास्ट ट्रैक इट विल टेक रिवर्स टर्न टू सैटिस्फाई 37,
देन 14। इस ऑर्डर में सेटिस्फाई होंगे रिक्वेस्ट। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सीक्स मेड बाय रीड राइट हेड फॉर स्कैन एल्गोरिथम कितने होंगे? वेरी सिंपल, 199 माइनस 53 प्लस 199 माइनस 14, ये हो गए। तो आई थिंक दिस इज 331। चंचल, यू आर राइट। इवन अदर पीपल लाइक भाव्य गुप्ता, मोहित, 330, नॉट 330, मोहित चेक इट, 331 करेक्ट। तो 331 स्कैन। अब मुझे क्विकली लिख के बताइए चैट विंडो में, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ स्कैन? कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ स्कैन? या व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ स्कैन? जल्दी लिख के बताइए। कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स। Extra seek time while looking in one direction. No, it is not like that. Yes, seek till last. See, boys and girls, जब 183 पे वो satisfy कर रहा है request, where is the necessity to go up to 199? यहां पर तो 199 छोटा है, ठीक है, 199 is a small figure. मान लीजिए if you had a disk with 1000 tracks, तो मतलब 183 से it will have to unnecessarily travel up to 1000, right? 999. It has to unnecessarily travel. And that will cause starvation to the requests which are pending in opposite direction. देखिए आप, अभी यहां पर मूव हो रहा है, फिर यहां पे आएगा, तो it will go unnecessarily to the last track. It will go unnecessarily to the last track and then take reverse turn. तो उसके लिए जो request हमें यहां पर है, that will be subjected to suffer from the problem of starvation. तो हम वो starvation अगर नहीं चाह रहे हैं, तो इसका एक वेरिएशन है स्कैन का, जिसे हम बोलते हैं लुक। लुक, राइट? तो लुक में हम क्या, क्यों इसे लुक बोलते हैं? इसकी वजह यह है, द रीजन फॉर कॉलिंग इट एज लुक इज इट लुक्स इंटेलिजेंटली, लुक अप टू द लास्ट रिक्वेस्ट, लुक अप टू द लास्ट रिक्वेस्ट एंड देन टेक रिवर्स टर्न। Don't go up to the last, look up to the last request. Don't go to the last track, look up to the last request. तो हम विदाउट ड्राइंग द डायग्राम, यहां पे विदाउट ड्राइंग मतलब क्या है, यहां पर अगर छोटा सा मैं चेंज कर दूं तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, राइट? एक दूसरे कलर से हम लिख देंगे टू डिनोट द डिस्टिंक्शन। तो ये तो पहले आ जाएगा 183 तक, ठीक है, एंड देन 183 से ही वो रिवर्स होगा, यहां पर ऐसे रिवर्स ले लेगा। तो क्या होगा? नंबर ऑफ सीक्स कैलकुलेट कर लीजिए। नंबर ऑफ सीक्स होंगे आपके 183, डायरेक्ट करेंगे, 183 माइनस 53 प्लस 183 माइनस 14, दैट्स ऑल। दिस इज नथिंग बट आई थिंक 299, राइट? यस, वेरी करेक्ट, 299। दिस इज नथिंग बट लुक। अब तक 4 एल्गोरिथम्स हम देखें। देयर आर स्टिल अदर वेरिएशंस ऑफ स्कैन, देयर आर स्टिल अदर वेरिएशंस ऑफ स्कैन। कौन से है? फिफ्थ वन इज कॉल्ड सर्कुलर स्कैन, टी स्कैन, सर्कुलर स्कैन। यहां पर क्या होता है? सर्कुलर स्कैन, वी कंसिडर द डिस्क टू बी, वी अज्यूम द डिस्क टू बी इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, एंड रीड राइट हेड इज अज्यूम्ड टू बी मेकिंग ए सर्कुलर मोशन। रीड राइट हेड इज अज्यूम्ड टू बी मेकिंग अ सर्कुलर मोशन। मतलब अगर हम मान लीजिए 53 से है, तो आगे बढ़ते जाएंगे 53, 60, 70, 80, 100, 100 के बाद 150, 200 या 199, 199 के बाद उसका जो नेक्स्ट ट्रैक आएगा वो आएगा जीरो, सर्कुलर मोशन, जीरो, साइक्लिक मोशन। तो इस तरीके से है सर्कुलर स्कैन। मतलब अब मैं इसे रब कर दूंगा और सर्कुलर स्कैन के लिए हम ड्रॉ करेंगे कैसे वर्क करेगा। How is it going to work for circular scan? So before I work out, let me check, because generally I saw people making mistake here. तो जल्दी वर्कआउट करके मुझे बताइए, what is the total number of seeks that are going to be made for circular scan for this data set? Come on, do it please. What is the total number of seeks? Come on, boys and girls. How many seeks are made with circular scan for this data set?
Okay, let me see. That's what I said. I'm going to get different answers. Sritam Sven is saying 359, Bhavya Gupta is saying 382. यही है प्रॉब्लम. तो ये क्लैरिटी होना जरूरी है. मोहित इज सेइंग 192. यहाँ ही मैं बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, दैट्स व्हाई आई आस्क यू टू वर्क आउट. यहाँ पर कई लोग गलती करते हैं सर्कुलर स्कैन में. मैक इज सेइंग 183, ललित यादव 382, चंचल 183. देखिए आप कितने डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, मतलब कितनी इनकंसिस्टेंसी है आपकी अंडरस्टैंडिंग में ये टॉपिक पे सर्कुलर स्कैन. उसी तरह सर्कुलर लुक पे भी काफी लोग गलती करते हैं. तो सर्कुलर स्कैन और सर्कुलर लुक दोनों इंपॉर्टेंट है. मैं एक प्रीवियस गेट क्वेश्चन भी लाया हूं फॉर सर्कुलर स्कैन एंड सर्कुलर लुक. कम ऑन, लेट अस सी फर्स्ट. लेट मी सी द आंसर्स. 382, 359, 200 and 382, 192, 183. So many different answers. So many different answers. Okay. I think Bhavya Gupta, now you are right. Earlier you said, okay, earlier also you said 382. Neha Mishra 164. Tapan Ghosh 382. Okay. ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं. We'll start it now. How it works? See on board. We are at 53. Circular scan. So we'll moving in forward direction 65, 67, 98, 122, 124, 183, right? It will go to 199. Then after that I said it should initialize at 0. But लेकिन ये circular actually है नहीं, we are assuming it. मतलब वो क्या करेगा, ये एक प्रॉब्लम है. It will go from 199 and get initialized to 0. अब 0 से फिर से स्टार्ट करेंगे हम. Then it will come to 14. अब 14 की रिक्वेस्ट अब सेटिस्फाई होगी. Then it will come to 37, अब सेटिस्फाई होगी. तो कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ सीक्स, यहां पे हम कैलकुलेट कर लेंगे. आई विल पुट द वैल्यू 199 माइनस 53 प्लस 199 माइनस 0. जनरली ये फैक्टर को स्टूडेंट इग्नोर करते हैं एंड गो रॉन्ग. दिस 6 199 माइनस 0, this has to be added, plus 37 minus 0. These are the number of seeks. What is the answer for this? Come on, Lalit Yadav. This is 382. Shall I believe it is 382? Yes, 382. 382. ये है सर्कुलर स्कैन. दिस इज सर्कुलर स्कैन. उसी तरह एक ऑप्टिमाइजेशन है लुक का, जिसे हम कहते हैं सर्कुलर लुक. सर्कुलर लुक, it is an intelligent version of look, circular look, in comparison to circular scan and scan. Circular look उसी तरीके से ऑपरेट करेगा. मतलब it won't go up to 199. Like look, it will go only up to 183 and take a reverse sweep. Or second, it won't get initialized to 0. Intelligently it will come to the first request at the other end. चलिए ये बेसिस पर जल्दी मुझे वर्क करके बताइए कि what is the number of seeks made by read write head in serving the request using circular look. Come on, circular look से कितने आएंगे? What is the number of seeks? What is the number of seeks made by read write head in serving the request? $322, okay. $322, करेक्ट. तो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूं कि कैसे सर्कुलर लुक को सेटिस्फाई करेंगे हम. ठीक है, I will do it with differenting for this. So from 183 it will take reverse sweep and gets initialized to 14, and from 14 it will come to 37. This is the motion. This is the movement of read write head. तो आप कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ सीक्स. इट विल बी 183 माइनस 53 प्लस 183 माइनस 14 प्लस 37 minus 14. This is your number of seeks made by read write head using
circular look. तो ये हो गया आपका 322 I think, yeah. So this will give you 322. This is 382. This is 299 and this is 331. और पिछले बार हमने देखा using, so I have done all these 6 algorithms. These are the 6 standard scheduling techniques. इसे आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए और जो PYQs वर्क कीजिए, then definitely very smoothly you can work out. Of course, in earlier paper थोड़े twisted question भी थे ये basis पर, right? So that also you can make a try, but you can better solve such twisted questions by taking into account the disk organization. Disk organization आपका thorough होना चाहिए, right? So आप generally you can use like shortest seek time first, or maybe you can use the first come first serve. So there is no hard and fast rule which one is used. It is implementation specific. Implementers के ऊपर होता है वो. Okay. So let's take some PYQs to test your answer. Come on, boys and girls, work out this and tell me what is the correct answer for this. This is from one of the previous paper, NAT question, 2 marks. Come on, work out and tell me what is the correct answer. जल्दी वर्कआउट कीजिए as a matter of practice. Okay, Tapan Ghosh is saying 346. Let me write as options. Somebody has already given at 346. Others I would like to explore. Tapan Ghosh. Chanchal is also saying 346. Okay. Come on, others. Mohit is also 346. Very good. Using look algorithm. Hasnain is saying 356. Be careful. यही mistakes है. I got 356 also. Bhavya Gupta, direction at any cost will be given. There is nothing like default direction. Direction हमेशा दिया जाएगा, don't worry. There is nothing like default. Yes, I think answer is 346. I will go with it. Ratify. 346 is correct. जिन्होंने भी नहीं किया 346 वो प्लीज चेक कर लें आप कहां पर मिस्टेक कर रहे हो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे. आंसर दिस क्वेश्चन प्लीज. ये दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा सा इसमें ट्रिक है ये क्वेश्चन में. बी केयरफुल स्टूडेंट्स. थोड़ा ट्रिक है. बी केयरफुल, वर्कआउट दिस एंड टेल मी द आंसर. आई एम वेरी श्योर यू आर गोइंग टू गिव मी डिफरेंट आंसर्स. मुझे मैं श्योर हूं. कम ऑन, लेट मी सी वेदर you will ratify my statement or not. Work out this.
ललित यादव इज सेइंग 2. ठीक है, ललित यादव का आंसर हम यहां डाल देंगे, फर्स्ट ऑप्शन 2. सेकंड, चंचल इज सेइंग 3. थर्ड, भगवाधारी इज सेइंग 3. आई मीन 3 तो मल्टीपल टाइम फिर नहीं लिखेंगे हम. सो फार 2 and 3. अदर पीपल ऑल्सो प्लीज टेल. और कुछ अगर आंसर आ रहे हो आपके तो. मुझे यकीन था ये 2 आंसर्स आएंगे, 2, 3. और भी देखेंगे हम. ललित यादव अगेन चेक. Agreed? 3 is correct because 100 is also a request. देखिए आप, प्रॉब्लम यहां पर यह है, there are 201 cylinders sequentially numbered from 0 to 200. At some time the discom is at cylinder number 100, right? तो अगर आप मान लीजिए इस तरह से अगर है, this is from 0 to 200, ये आपकी है 100. The discom is at 100, right? So request is this 3085. मार्क कर लीजिए 30. So this is 50 mark and this is 150 mark. So 30 is here. 25, 30 यहाँ पे लेंगे. 85 यहाँ ले लेंगे. 90 यहाँ और क्लोज ले लेंगे. Then 100 तो है. 105 यहाँ पे क्लोज 105. फिर 110 यहाँ पर ऊपर 110. फिर 135 से 135 here and 145 here. इस तरीके से. तो 100 है. विच एल्गोरिथम आर वी यूजिंग? शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, SSTF. शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट ले रहे हैं. तो शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट से कहां जाएंगे? पहले हम 100 से विद जीरो सीक वी विल सैटिस्फाई 100. विद जीरो सीक विल सैटिस्फाई 100 फर्स्ट. अब 100 के बाद कौन सा सैटिस्फाई करेंगे? नियरेस्ट है, राइट? 90 इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10. 105 एट ए डिस्टेंस ऑफ 5. तो हम सैटिस्फाई करेंगे 105. करेक्ट. 105 के बाद 110 करेंगे. 110 के बाद देखिए आप, या तो ऑप्शन है 135 या ऑप्शन है 90. तो 110 माइनस 90 20. 110 टू 135 25. सो नेचुरली हम जाएंगे 90 पर. और वो पूछ रहा है वही सिलेंडर 90 is serviced after servicing how many requests? देखिए आप 1 2 3 after servicing 3 requests. अगर आप 2 बोलेंगे तो गलत हो जाएगा. I hope you understand. Correct? Check it again. You are at 100 to 100 first. फिर 100 से नियरेस्ट कौन सा है? 105. Why 130 or 30? Pritam Swain, where are you? Right? So after 90 you will go to 85. After that you will go to what? You will go to 30. Or you calculate 85 to 30 how much? 85 to 135 how much? Whichever is nearer you satisfy that. Whichever. अगर दोनों सेम है तो आप कोई भी सेटिस्फाई कर सकते हो. अगर वहां पे थोड़ा आप इंटेलिजेंस अप्लाई कर सकते हो कि हाउ मेनी रिक्वेस्ट आर मोर ऑन दैट साइड, दैट विल बी सर्व्ड. सेम है तो आप वही बता रहा हूं ना, रिक्वेस्ट ज्यादा किधर है आप वो सेटिस्फाई कर लीजिए. यहां पर ज्यादा रिक्वेस्ट है, इधर सेटिस्फाई कर लीजिए आप, सो दैट यू कैन हैव लेस नंबर ऑफ सीक. वरना आप इधर जाकर इधर आएंगे तो फिर बढ़ जाएगा टाइम. राइट? सो दैट वे यू कैन अप्लाई. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स हियर इन दिस शेड्यूलिंग. ठीक है? देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. चलिए आगे बढ़ेंगे. ये अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है. प्लीज वर्कआउट एंड टेल. Chanchal, you check. Sritam is saying 55, 50 for both. Is it 50 or 55 or 50 as you say? You decide. That's a very simple thing. I don't have to intervene. आप देख लीजिए. Mihir Kashyap, how can I know about other subjects? Come on, boy. ये क्या है ये मतलब? How can I answer for other batch which is not started? I'm not concerned with that. Come on, you focus on problem solving. These are very simple and interesting problems. Focus on this.
This is an interesting question, and I saw that many students gave wrong answers for this. Expected improvement in the IO performance. Expected improvement in the IO performance of user programs. Options बताते जाइए आप, A, B, C, D. Tushar Sisodia is saying 90%. 90%. परसेंटेज में बोलिए आंसर. Come on, other people also please participate. Chanchal is saying 0%. Come on, boys and girls. Tapan Ghosh also saying 0%. Okay. Tushar is saying no improvement. Okay. चलिए मैं और ऑप्शन दूंगा आपको 50%, 100%. ठीक है, ठीक है, जो भी आंसर बोले हैं 0% या नो चेंज, नो इंप्रूवमेंट, क्यों बताइए? वाई? आई वुड लाइक टू सी द रीजन फ्रॉम योर चैट बॉक्स. आई वुड लाइक टू रीड द रीजन वाई देयर इज नो इंप्रूवमेंट. ये मुझे बताइए, वाई देयर इज नो इंप्रूवमेंट. कैन यू राइट डाउन द स्टेटमेंट? कैन यू राइट डाउन द रीजन why there is no improvement? Why there will not be any improvement? Come on. Generally what happens is many a time the student give the correct answer but without proper reasoning. उनके justifications wrong होते हैं. Justifications are also important for subject understanding. Subject के लिए knowledge भी काफी important है. बाज़ वक्त आंसर सही होते हैं लेकिन आपका justification, आपकी reasoning गलत होती है. So you need to have extremely correct reason for justifying your answer. Come on, why is it 0%? Mohit, Bhagwadari, Chanchal, Asif, Tushar, बताइए, why 0% according to you? Write the reason. हिंदी में अगर है तो हिंदी में ही लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. But reason, writing the reason, knowing the reason, telling the reason is important. Come on, nobody is writing. Why 0%? Because we are asking for user program. ठीक है, OS doesn't have choice to pick an input output at a time. Okay. Like we have only one request coming in it, it will always execute in FCFS. Chanchal, I mean FCFS आप जब बोलेंगे तो फिर गलत होगा. ठीक है, right now we are using FCFS. He is saying, the vendor is saying you change FCFS with shortest seek time first. अब मान लीजिए मैंने FCFS remove कर दिया और shortest seek time first डाल लिया system में. So what is going to happen? Still, I'm not getting that convincing reason. Convincing reason. Broken engineers, you are saying OS can execute single user process. मतलब क्या है इसका और थोड़ा आप elaborate कीजिए. The answer lies in the first statement. Consider an operating system capable of loading and executing a single sequential user process at a time. मतलब क्या है? From this example, from this statement, what conclusion should I draw? बोलिए, बताइए, what conclusion should we draw? Not uniprocessor, Lalit Yadav, uniprocessor गलत आंसर है. From this statement, consider an operating system capable of loading and executing a single sequential user process at a time. ये basis पर हम क्या conclusion draw करें with regard to operating system? Meaning, मैं पूछ रहा हूं आपसे, what kind of operating system is this? बोलिए. At a time only one process को हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे? हमने फर्स्ट क्लास ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्कस किया था. What kind of operating system is this? I want the term coming up in the chat box from you. Come on.
No multi-programming means what? What kind of operating system? Chanchal, not single user. No, single user can be multi-programmed also. No, you are not telling. Yes, GetEasy has told, not uniprogrammed OS, correct. So this is nothing but uniprogramming. is uniprogramming. मतलब ये है, देखिए आप, if you consider for example the memory, ये memory है आपकी, ठीक है? The memory is divided into two parts. One part will be meant for operating system. The other area हमने कहा user area है. तो ये user area में he is saying very clearly it can load only one program P. जब आपके पास सिर्फ एक ही प्रोग्राम होगा तो at a time how many processes you can run on CPU or how many processes will be there for the disk? Only one. जब आपके पास एक ही प्रोग्राम होगा मेमोरी में, एक ही प्रोसेस होगा मेमोरी में, तो वेयर इज अ नीड फॉर शेड्यूलिंग. सो देयरफॉर देयर इज नो नीड फॉर शेड्यूलिंग. शेड्यूलिंग की कोई जरूरत ही नहीं है. नाइदर सीपीयू शेड्यूलिंग नॉर आईओ शेड्यूलिंग. इज इट नॉट? यू डोंट रिक्वायर एनी शेड्यूलिंग. देयर इज नो नीड ऑफ शेड्यूलिंग. वही प्रोसेस रन होगा, वही प्रोसेस आईओ परफॉर्म भी करेगा. कहां पर आपको सिलेक्ट करना है? Right? So whether you have FCFS scheduler or whether you have SSTF scheduler, absolutely there is not going to be any change in the performance. Yes, correct. Broken engineers. Scheduling के performance improvement के लिए you need to have more than one processes with different requests. तभी आपके पास या तो improvement होगा या degradation होगा. Correct? So therefore there is no question. तो आप FCFS से SSTF के रिप्लेस कर लीजिए या कोई और एल्गोरिथम रिप्लेस कर लीजिए, there is not going to be any improvement in IO performance, क्योंकि हमारे पास सिस्टम में सिर्फ एक ही प्रोसेस अवेलेबल है. तो क्वेश्चंस लाइक दिस आर इंपॉर्टेंट. ये आपकी नॉलेज को टेस्ट करता है, कॉन्सेप्ट को टेस्ट करता है. राइट? बी केयरफुल विद दिस. चलिए और एक क्वेश्चन देखेंगे. ये आपको मैं एज एन एक्सरसाइज दे रहा हूं. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. दिस इज नॉट ए गेट क्वेश्चन, राइट? लेकिन ये दिस इज अ पोटेंशियल गेट क्वेश्चन. दैट इज व्हाट आई वुड से, पोटेंशियल. थोड़ा इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसमें. आई वुड लाइक यू टू वर्क आउट एज होमवर्क. आई विल गिव दिस इन द स्लाइड. आई एम गिविंग यू एज होमवर्क. यू कैन वर्क आउट. इट्स इंटरेस्टिंग. आप कर सकते हो आराम से. यहाँ पे कुछ चीजें पूछे गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल he is giving, he has given current head position, track time, direction of movement is higher number track, and current clock time is given. And the following data set, we need to calculate several things. Time of making decision, time of making the decision. Pending request कितने हैं वो टाइम पर, head position क्या है, selected request कौन सी है, seek time कितना है, using FCFS, SSTF, scan, look, circular look, पूरे algorithms. It will be a good question. देखिए आप, सीरियल नंबर है, ट्रैक नंबर, these are the track numbers, this is the time of arrival. ये एक डिफरेंट है यहां पर, स्टार. So this will be a good question to work out. So I would appreciate you please work out this. This will be a good exercise for you. पूरे algorithms आप solve कीजिए for this data set. Time of arrival है यहां पर, arrival, what time the request is coming, just like first come first serve, right? So this is also a very good question you can work out as a matter of practice. ठीक है? करंट क्लॉक टाइम मींस करंट टाइम. देखिए आप, सिंपल बता दूंगा. अब करंट टाइम कितना है? अब करंट टाइम है 7:30. तो करंट टाइम व्हेन वी आर सर्विंग, व्हेन वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस डेटा सेट इज 160. ठीक है? अब ये देखिए, नाउ बाय टाइम 160, प्लीज डियर स्टूडेंट्स फॉलो मी. नाउ एट टाइम 160, व्हेन वी आर एट टाइम 160, अब मुझे आप बताइए बेस्ड ऑन दिस डेटा सेट, बाई टाइम 160 कौन से रिक्वेस्ट अमंग दीज 5 रिक्वेस्ट हैज आ चुके, ये बताइए. ये बताइए मुझे. बाई टाइम 160 हाउ मेनी रिक्वेस्ट हैव कम? यस, 1 to 4. क्यों? इसका अराइवल टाइम है 65, आ चुका. 80 आ चुका, 110 आ चुका, 120 आ चुका, लेकिन 175 अभी ये रिक्वेस्ट नहीं आया है. तो जब हम वर्क करेंगे स्पेसिफिकली शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट या लुक या स्कैन, ये हमें क्रिटिकली इवैल्यूएट करने के लिए वी हैव टू थिंक केयरफुली. ठीक है? तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हम क्या करेंगे? सबसे पहले कौन सी रिक्वेस्ट सेटिस्फाई करेंगे? जो पहले आई 65 सेटिस्फाई करेंगे.
राइट, विच इज फॉर ट्रैक नंबर 12। और हम कहां पर, ट्रैक नंबर यहां पर देखिए 65 से 12 को जाएंगे। ट्रैक टाइम 1 मिली सेकेंड है, तो कितना डिफरेंस हो गया, ये एक कर रहा हूं मैं आपको, 65 to 12, तो 65 माइनस 12 कितना होगा, ये 3 है, ये 5, तो 53, तो 53 मिली सेकेंड। क्यों, एक ट्रैक मूव होने के लिए 1 मिली सेकेंड लग रहा है। सो टोटल सीक टाइम फॉर सेटिस्फाइंग द फर्स्ट रिक्वेस्ट इज 53 मिली सेकेंड्स। टाइम कितना हो जाएगा, 160 प्लस 53। नाउ माई करंट टाइम विल बी 53 अगर आप ऐड कर देंगे तो 213, ये करंट टाइम हो जाएगा। क्लॉक का टाइम बढ़ जाएगा 53, 160 से 213 हो जाएगा। एंड नाउ बाय 213 ये भी रिक्वेस्ट आ चुका 175 मिली सेकेंड। फिर सेकंड रिक्वेस्ट हम सेटिस्फाई करेंगे, कौन सा करेंगे, देखिए आप सेकंड रिक्वेस्ट आया था 80 मिली सेकेंड पर, तो 85, मतलब अब है 12 पर है, हम 12 ट्रैक नंबर 12 पर है, 12 से 85 को जाएंगे, नंबर ऑफ सीक्स कैलकुलेट कर लीजिए 73, तो इसमें 73 ऐड कर लेंगे हम। ठीक है, समझ गए, इस तरीके से टाइम आगे बढ़ेगा, आप सेटिस्फाई कर पाओगे। रिपीट द प्रॉब्लम फॉर ऑल दी एल्गोरिथम्स, राइट। दिस विल बी आल्सो बी ए वेरी गुड एक्सरसाइज एंड चैलेंजिंग। यू कैन सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन। टाइम ऑफ डिसीजन क्या है, पेंडिंग रिक्वेस्ट क्या है, हेड पोजीशन क्या है, सिलेक्टेड रिक्वेस्ट कौन सी है, राइट, सीक टाइम कितना है, ये पूरा आप कैलकुलेट कर सकते हैं टू गेट ए ग्रास्प ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व इन दिस शेड्यूलिंग। ठीक है, दिस यू वर्क एज अ होमवर्क। ये क्वेश्चन देख लीजिए, तो रीजनिंग क्वेश्चन है ये भी, ट्राई टू वर्क आउट दिस। कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स। The amount of disk space that must be available for page storage is related to maximum number of processes n, the number of bytes in virtual address space b, and the number of bytes in RAM r. Given expression for the worst case maximum disk space requirement for our system. Very simple. Any answer for this question? Write down NB minus R. No. Why NB minus R? Why RAM will come into picture? Why RAM will come into picture? Does virtual memory depends on the size of RAM? Is there any relation between RAM size and disk size in the system? क्या कोई ऐसा relation होता है आपके desktop या laptop पे? Think carefully. Think carefully. The logic is like this. Let's say this is our CPU. And let's say this is our disk. Our disk is CPU. Whenever we run any process PI, let's say it is generating an n-bit address, and as per the notion, the amount of virtual address space that it can access as given in this question is S, right? B bytes, number of
bytes in virtual address space is b. That means b is equal to 2 power n. B is equal to 2 power n. Got it? B is equal to 2 power n. This is a virtual address space. तो हमने कहा वर्चुअल मेमोरी में कि दिस वर्चुअल एड्रेस स्पेस विच द मैक्सिमम प्रोसेस कैन बी इन शुड बी स्टोरेबल ऑन डिस्क. मतलब ये प्रोसेस P1 का आपका जो स्टोरेज है B होना चाहिए. लेटर इफ यू रन सेकेंड प्रोसेस उसके लिए भी B वर्चुअल एड्रेस स्पेस होना चाहिए. थर्ड प्रोसेस के लिए भी यू शुड बी स्टोरेबल ऑन डिस्क. मतलब ऐसे कितने प्रोसेसेस है? वी आर हैविंग n प्रोसेसेस Pn, तो उसका भी B होना चाहिए. तो देयरफॉर द डिस्क साइज should never be less than n into b. This size should be never less than n into b. Correct? Max, that is the worst case requirement. Compulsory support n into b bytes. This should be the this size. This is the approach of this question. ठीक है? ये भी एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्क ऑर्गेनाइजेशन पे दे रहा हूं. जब आप सीओ में हार्ड डिस्क ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे देन यू कैन वर्क आउट दिस क्वेश्चन. दिस आल्सो a star question according to me, because this requires the disk organization concepts. जब आप वो concepts पढ़ लेंगे तो you can solve this interesting question also as exercise. This will also be a very good exercise for you to work out, right? This is realistic problem. I can say this is a realistic problem. How long does it take to load a 64 kilobyte program size है from a disk into main memory, whose average seek time, देखिए आप average seek time है disk का, rotation time है 20 millisecond, ट्रैक साइज गिवन है, पेज साइज है, राइट? तो दिस इज ए क्वेश्चन विच इज पर्टेनिंग टू, लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज अ डिस्क. वो डिस्क पर एक प्रोग्राम है P, उसका साइज है 64 KB. तो ये प्रोग्राम को जो आप लोड करना है मेन मेमोरी में फॉर एग्जांपल, कितना टाइम लगेगा, राइट? मेन मेमोरी में नहीं, एक्चुअली डिस्क कंट्रोलर में आना है. यहां पर हम थोड़ा चेंज कर लेंगे, कंट्रोलर में ट्रांसफर दिस इनटू कंट्रोलर, सो दैट फ्रॉम कंट्रोलर it can go into main memory using memory cycle time. तो ये टाइम कितना होगा? रियलिस्टिक प्रॉब्लम है. हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लोड ए 64 किलोबाइट प्रोग्राम फ्रॉम डिस्क? डिस्क से लोड करने के लिए कितना टाइम लगेगा? इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इज नॉट फ्रॉम प्रीवियस गेट. दिस कुड बी ए पोटेंशियल क्वेश्चन. इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं. तो प्लीज आफ्टर लर्निंग डिसऑर्गेनाइजेशन थरोली, आफ्टर नोइंग डिसऑर्गेनाइजेशन थरोली, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑल्सो एज ए होमवर्क एक्सरसाइज. ठीक है? So this is what I had for today's session with regard to the disk organization. Like, so in the next session, as I told, I would for another maybe 10-15 minutes, I will just brief up to you what to do, what to prepare, what not to do for the GATE exam with regard to the subject of operating system. Okay? And how you should be doing it. See, by this time there is nothing like you are starting your preparation. ऐसा तो नहीं है कि ये टाइम पे आप स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन. हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि ऑलरेडी आपने अपना प्रिपरेशन किया हुआ है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ा है, ये अजम्पशन है. बेस्ड ऑन दैट आई एम सजेस्टिंग फ्यू थिंग्स फॉर यू टू वर्क आउट. नंबर 1, आई एक्सपेक्ट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड योर लॉन्ग नोट्स प्लस शॉर्ट नोट्स बोथ. लेकिन फॉर एनी रीजन, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फॉर एनी रीजन आपने अगर लॉन्ग नोट शॉर्ट नोट नहीं बनाए हैं, तो माई एडवाइस इज बिकॉज ऑन इंटरनेट देर आर मेनी सोर्सेस अवेलेबल वेयर यू कैन डाउनलोड सम हैंड रिटन नोट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी got all India rank, good rank, right? So if they have such resources, you can download and then you can refer. ठीक है? So that is a thing. Long notes plus short notes. ये आपको होना चाहिए. ये इसके बाद you have to do a consistent revision, please. ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए. Consistent revision, both from hand, long notes and short notes. Long notes only you should refer those topics जिसमें आपको कंफर्ट लेवल कम हो, जहां पर आपकी कंसिस्टेंसी थोड़ी कम है, तो लॉन्ग नोट से आप वो टॉपिक्स बार बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए. शॉर्ट नोट्स पे रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, 15 मिनट है, 20 मिनट है डेली, क्विकली आप जैसे शॉर्ट नोट्स में लीजिए. शॉर्ट नोट्स में ये आपको करना है कि यू नीड टू हैव सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, नोट डाउन करके रखिए, सो दैट यू मेक यूज ऑफ देम. जैसा सीपीयू शेड्यूलिंग में है या और कोई मेमोरी मैनेजमेंट में है, पेज टेबल साइज है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस.
ठीक है, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन कैसा कंप्यूट करते हैं, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन कैसा कंप्यूट करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, यू शुड मेक ए नोट इन द शॉर्ट नोट्स एंड रेगुलर बेसिस यू परफॉर्म, मैं रेगुलर बेसिस कह रहा हूं, राइट, रेगुलर बेसिस कह रहा हूं कि यू शुड परफॉर्म ए कंसिस्टेंट रिवीजन, दैट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर गेट। हर सब्जेक्ट का कंसिस्टेंट रिवीजन चाहिए एट दिस स्टेज, जब यू हैव ऑलमोस्ट जस्ट दिसंबर एंड जनवरी 2 months, बिकॉज शेड्यूल तो रिलीज हो गया है, सो देयरफॉर इन दिस 2 months यू शुड हैव ए कंसिस्टेंट रिवीजन एस्पेक्ट। ऐसे जो टॉपिक्स है सब्जेक्ट में जिसे आपको काफ़ी दिक्कत हो रही है, काफ़ी परेशानी हो रही है समझने की, मैं ये कहूँगा कि यू कैन इग्नोर दोस टॉपिक्स, डोंट ट्राई टू फोकस। हाँ, अगर अफोर्डेबल है, कोई फैकल्टी से आप इंटरेक्ट करके उसे वर्थवाइल अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो कर लीजिए, बहुत अच्छा है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश ये है, रिक्वेस्ट ये है कि इफ़ यू रियली आर एस्पिरेंट ऑफ गेटिंग ए गुड स्कोर या फिर गेटिंग ए गुड रैंक, 2-digit rank at least, at most I would say, not at least, at most 2-digit rank, not more than 2-digit rank, then I would say that compulsory हर सब्जेक्ट की हर टॉपिक आपको थरो होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी सब्जेक्ट आप छोड़ दें, सीओ छोड़ दें या फिर नेटवर्क छोड़ दें या ऑपरेटिंग सिस्टम छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन सिक्योरिंग एट मोस्ट 2-digit rank, then compulsory you have to study each and every topic, each and every concept, वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर दूसरे कोई अगर रिक्वायरमेंट्स है, लाइक सर आई डोंट वांट टू बेसिकली गेट ए गुड रैंक, अब मेरे पास नहीं है, लेकिन जितना भी अवेलेबल टाइम है उसमें मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ सो दैट आई गेट ए रीजनेबल गुड स्कोर, रीजनेबल गुड रैंक, देन बेसिकली आप वो टॉपिक जो आप थरो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, right? You ignore those topics or subjects which is not affordable for you. Just focus on those topics or those subjects which you are potentially and favorably you are comfortable enough. उसको बार बार पढ़िए और उसमें अपना comfort level increase कीजिए। So the key for success is consistent revision. Plus third, practice. Practice के लिए generally ये मैं करता हूँ कि I mean I don't know how you are preparing. Like for example, if I have been teaching in regular batch, then I used to tell my student that you have to solve the questions which are dealt in the class. जब मैं क्लास में क्वेश्चन लेता हूँ पहले वो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, फिर उसके बाद ऑल PYQs. At least make sure that you solve these minimum 5 times thoroughly. हर सब्जेक्ट के लिए minimum 5 times till before the GATE exam. अगर आप PYQ thoroughly अगर सॉल्व कर लेंगे तो there is a chance that you may have 95% hit ratio. आप एग्जाम में you will definitely able to hit the questions of the exam if you are thorough with previous year questions. यहां पर एक बात बता दूं, thorough with previous year question doesn't mean that you have to by heart the answers and remember the answers. No, concept understand करना है. The working mechanics of the question you should understand, so that if there is a little twist with regard to that question asked in the exam, then basically you should be able to solve it. ये मेरा मतलब है, right? PYQs में. Then fourth level पे आ जाएगा आपका for example test series. My dear students, generally I tell that test series आप, मैं ये नहीं बोलूँगा आप ये test series लीजिए या वो test series लीजिए, right? So generally I don't recommend test series to be like a threshold or like a milestone for you, like a benchmark. It is not like a benchmark or milestone, right? No test series is complete, no test series is comprehensive, no test series is on par to the level of GATE. That's what I say. Some may be below standard and some may be too high a level which you can't expect in the exam. वो भी गलत है. आपको जितना पढ़ना है गेट के लिए उतना ही पढ़ना है. ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ लिया आप, extraordinary, right, which is not needed and that will lead to basically ignoring other subjects. ऐसा नहीं होना चाहिए. No, please, PYQ, Bhagwadari, PYQ, I mean starting from 2000 at least. Year 2000 to 2022. Starting from 2000 you should take. Previous year के भी आप ले सकते हो. It will be highly appreciable. Generally मैं जो questions लेता हूँ, I start from 93 onwards to 2022. ठीक है? जहाँ से वहाँ से लेता हूँ 93, 94. 93 भी ना 94, yeah, appropriately. Then that will be improving your comfort level. It will have a really good question bank. So I was talking about test series. So no test series. I mean, GATE के preparation के लिए ये भी बहुत important है कि आपको कितना पढ़ना है.
ऐसा ना हो कि बिल्कुल थोड़ा पढ़ें, या ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिए एम्बिशियसली, राइट। ये आई मीन फैकल्टी को ये नहीं होना चाहिए कि ठीक है भाई मुझे मालूम है, मुझे पूरा चीज़ बता देना चाहिए स्टूडेंट को, विच इज़ नॉट नीडेड ऑल्सो फ्रॉम गेट परस्पेक्टिव। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, एक सिंपल पॉइंट बता रहा हूं मैं कि बेलाडीज एनोमली, मैंने लास्ट क्लास, पिछले क्लासेस में जब बेलाडीज एनोमली की बात किए थे मैंने कहा देयर इज अ रीजन फॉर हैविंग बेलाडीज एनोमली, दिस इज कॉल्ड स्टैक प्रॉपर्टी ऑफ पेज रिप्लेसमेंट। अगर वो हम डिस्कस कर लेंगे दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम अननेसेसरली, वो इंपॉर्टेंट नहीं है गेट के परस्पेक्टिव से। उसी तरह लाइक सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए हमारे क्यूइंग थ्योरी है, राइट, लाइक दैट इन मेमोरी मैनेजमेंट ऑल्सो वी कैन हैव क्यूइंग थ्योरी बीइंग एप्लीकेबल। अगर हम क्यूइंग थ्योरी की बात करेंगे, सिमुलेशंस की बात करेंगे, दैट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम, राइट। इफ सम टीचर इज एम्बिशियसली ट्राइंग टू टीच लाइक दैट, दैट इज ऑफ नो सेंस फ्रॉम गेट परस्पेक्टिव। हाँ, सब्जेक्ट के लिए ठीक है, आई एग्री विद दैट, बट गेट प्रिपरेशन के लिए यू हैव टू मेक ए स्मार्ट स्टडी, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, स्मार्ट स्टडी। स्मार्टली आपको पढ़ना है, राइट। उसके बाद आप सब्जेक्ट को इंप्रूव करने के लिए और आगे बढ़िए आप, देयर इज नो इश्यू, देयर इज नो कंटेंशन ऑन दैट, एब्सोल्युटली, ठीक है। लेकिन लिमिटेड टाइम में आपको किस तरीके से पढ़ना है, सो दैट आपका जो फर्स्ट गोल है टू क्रैक गेट, ओपन द विंडो टू आईआईटी, ठीक है, दैट शुड बी योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। तो टेस्ट सीरीज के बारे में मैं आपको यह कह रहा हूं, टेस्ट सीरीज शुड बी ओनली यूज फॉर टू थिंग्स। नंबर वन, चेक योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, चेक लेवल ऑफ प्रिपरेशन, कि आपका प्रिपरेशन लेवल कितना है। मतलब टेस्ट सीरीज से आप देखेंगे कि कोई क्वेश्चन आया है कोई टॉपिक से, अगर आप मान लीजिए वो टॉपिक आपने ना पढ़ी हो, तो टेस्ट सीरीज विल बेसिकली इंडिकेट दैट ठीक है भाई, दिस वन एरिया विच आई हैव टू एक्सप्लोर, आपको वो पता चलेगा, राइट, टेस्ट सीरीज से। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज विल अलाउ यू टू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स, कि आप कितना टाइम डिवोट कर रहे हो, राइट, टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। So these are the only two things. Absolutely, आपका परफॉर्मेंस इन टेस्ट सीरीज इज नेवर एनी बेंचमार्क टू असेस योरसेल्फ कि आपका गेट का रैंक कितना आएगा या उतना आएगा, ये हरगिज नहीं है। मैंने पिछले कई सालों से देखा है कि स्टूडेंट परफॉर्मिंग वेरी वेल इन टेस्ट सीरीज, फेलिंग मिजरेबली इन गेट, एंड वाइस वर्सा। ऐसा भी है कि टेस्ट सीरीज में काफ़ी बुरा परफॉर्मेंस है लेकिन गेट में अच्छा है मार्क्स, ऐसा भी है। तो टेस्ट सीरीज इज नो बेंचमार्क फॉर योर परफॉर्मेंस, मार्क्स परफॉर्मेंस और बेसिकली योर रैंक इंडिकेटर, ऐसा कुछ नहीं है। आई स्ट्रांगली अगेन रिकमेंड दैट यू शुड बेसिकली टेक टेस्ट सीरीज ओनली फ्रॉम दीज टू परस्पेक्टिव, फॉर योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, टॉपिक्स आपने पूरा पढ़ा है या ना है, या कोई एक ऐसा क्वेश्चन आया है टेस्ट सीरीज में जो वो टॉपिक आपने नहीं पढ़ी हो तो आप पढ़ लीजिए। और सेकेंडली, टाइम मैनेजमेंट, बस दो चीज़ों के लिए, डोंट गो इन टू एनी परफॉर्मेंस कंपैरिजन, डोंट कंपेयर योरसेल्फ, योर परफॉर्मेंस इन टेस्ट सीरीज विथ अदर्स एंड गेट डीमोरलाइज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट गेट डीमोरलाइज्ड, ठीक है। बी ऑलवेज विथ पॉजिटिव माइंडसेट, नेवर अलाउ योरसेल्फ to get demoralized, demotivated, negativity to come into your mind. That is highly important for gate preparation at this stage. ये स्टेज पर जब 2 महीने बाकी है, जब आपने इतने 6-8 महीने से प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा, तो अब एट दिस स्टेज आकर आपको कोई भी अपना ऐसा प्रोसेस माइंड में नहीं रखना चाहिए विच इज गोइंग टू किल योर पॉजिटिव एनर्जी। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स, ये नहीं कि सो एंड सो स्टूडेंट इज स्पेंडिंग 10 आवर्स, आई एम एबल टू स्पेंड ओनली 3 आवर्स, नहीं, ऐसा नहीं। Everybody has their own distinctness, uniqueness, instinct in themselves, right? हर एक के पास अपना कुछ एक पोटेंशियल है, you have to identify your positive potential in you and try to exploit upon it. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Everybody has, देखिए बाज लोग रात में अच्छा पढ़ सकते हैं, बाज लोग अर्ली मॉर्निंग अच्छा पढ़ सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन दी नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्सन। तो आपको आइडेंटिफाई करना है मेरे पॉजिटिविटीज क्या है, मेरी पॉजिटिव एनर्जी क्या है, उसको आप इंप्रूव कर लीजिए, ठीक है, दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट। बी कूल, बी पॉजिटिव, एटलीस्ट फॉर 2 months यू कीप सोशल मीडिया टोटली अलूफ, हटा दीजिए, मिनिमम रखिए, हटा दिए तो नहीं कहूंगा, मिनिमम कर दीजिए, मिनिमम से मिनिमम। बी अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस फॉर ए वाइल, बिकॉज इज अ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर यू, राइट, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल टाइम फॉर यू। So don't try to waste all the effort, money, energy which you have spent so far at this juncture of time, right? And then जो भी आपके aspects है, meditation है, prayers है, whatever it is, you try to perform that, and so that your mind is at peace. And create some space, some room basically for recreation during this time also. 1 घंटा या आधा घंटा ही सही, have a chat with friends, go out and then spend time, that is very important. Don't be just in a room
and then isolate yourself. ऐसा भी नहीं करना चाहिए. Right? Eat well, sleep well, and then speak well, listen well. This is quite is very important. Don't get yourself involved at this juncture of time into unnecessary politics, which is absolutely nonsense and waste of time. Just focus on your this. Okay? So this is what I would say. This is what I can do best for crash from the crash course perspective. 15 sessions of almost 1.5 years daily we have taken, right? So this is what I thought best we can do, but still we would have done, but due to time limitations and other subjects and the company policies, whatever best I can do, I had done. Hope you have enjoyed the sessions, maximum possible extent, right? Yeah, Chanchal is saying at times, yes, it happens. Chanchal, that is very natural. प्रशांत प्रभाकर, डिस्ट्रैक्शंस, डिमोटिवेशंस, ये बहुत नेचुरल है, हर एक के साथ होता है. ऐसा मत समझिए कि ये सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है, हर एक के साथ होता है. दिस हैपेंस, बट दैट इज व्हाट आई से. A strong person वही है, you try to overcome out of it, and you can do it absolutely. You can mingle with those people whom you feel they are your well-wishers, maybe friends, maybe family members, जो भी है, उनके साथ time spend कीजिए. Come out of distractions. And in the perspective of operating system, वही कह रहा हूं, there are so many processes active in your mind. Kill all those processes, kill, abort all those processes which creates negativity, which create demotivation, demoralization. Kill them. Have as less number of processes. Degree of multi-programming within your brain, try to cool down, come down. Don't worry about the subjects, right? Don't worry about the subjects. जो subjects, जो topics आपको discomfort है, आप कोशिश कीजिए at this juncture by interacting with your friends, by interacting with your other teachers whom you are in touch with, for example, try to clarify those concepts which still are not clear. If possible, well and good. अगर उसके बावजूद भी फिर भी अगर वो clear नहीं हो रहे हैं, तो leave it. Because GATE के जो total 65 questions है, आप पूरे के पूरे नहीं कर सकते. There will be some question definitely. There will be some question definitely which you cannot answer. Don't worry about it, right? That will happen with everybody. जब आप नहीं कर सकते with full preparation, दूसरे भी नहीं करेंगे. तो वही कर रहा हूं. Just have a positive mindset. Don't think क्या होगा मेरा result. See, result आपके हाथ में नहीं है. Result is not in your hands. What is there in your hands is your preparation. So focus only on preparation without worrying about result. I'm very sure your hard work will never go waste. And I pray sincerely to God that everyone who is present here or who are the GATE aspirants, right, do your level best and be awarded, be successful in all aspects. Okay? So that is what I wanted to basically tell. Yeah, see, I told already in the beginning, readability, writability and understandability is very important for GATE preparation, right? Is very important for GATE preparation. Okay? So this is what I have to say. So I hope I don't want to take much of my time because already एक video मैंने career aspects के लिए कहा है. In that I have talked more about GATE. If you want, it is there on the GATE Wallah channel. You can watch it. Tushar Gupta, those questions I cannot take up right now. Right, I may teach another subject. You have to wait and watch. Right. So which subject you can see it. Yeah. So thank you very much, boys and girls. Thanks for patience listening and very happy. And from bottom of my heart, I wish you all the best and pray to God that you achieve a huge and great success. Okay. Thank you very much. Good night. Take care.